Hello students, today we will do class 5th maths chapter number 7. Can you see the pattern? So let's start the chapter. What we learn in this chapter? We learn patterns of different type of numbers, shapes. We learn secret numbers and we also learn magic squares and magic hexagon. Isa, your skirt is beautiful. My mother made this pattern. I have seen the same bloke making a different pattern on a kurta. How was it different? ईसा जो कह रही है कि मेरा जो ये पैटर्न है वो कैसे डिफरेंट है. इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप एंड वन डाउन. देन दिस इज रिपीटेड. But in my brother's kurta, it is once up, then takes up 1/4 turn every time. The rule is to repeat it with the 1/4 clockwise turn. ये देखिए pattern is one up down and the second pattern is one up and 1/4 right side means clockwise pattern. Now use these two rules to make patterns with this rose block. ये देखिए rose block one up down and the second pattern is one up and the second 1/4 right, third one down and fourth 1/4 left means clockwise pattern. Okay, turns and patterns. Look at this block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the patterns. The first rule is repeated with the 1/4 turn. ये देखिए ये up है flower और ये 1/4 right side. Then 1/4 half down है means ये down है, फिर 1/4 left side. Okay. Then second rule is repeated with the half turn. ये half turn है, ये up down and the second rule is repeated with the 3/4 turn. ये देखिए ये first and the second 3/4. ये देखिए left side flower आ जाएगा. Then down, then again 3/4 right side, then up, then again 3/4 turn. Okay. अब ये देखिए आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, आप उनमें बताइए व्हाट शुड कम नेक्स्ट. ओके, ये देखिए ये फर्स्ट पैटर्न है, सेकंड, थर्ड. अब आगे आंसर इज देखिए ये वाला. ओके, सेकंड पैटर्न है, ये देखिए NZN. ये NZ नहीं, आप पैटर्न वाइज देखिए, फिर यहाँ Z एंड N. नेक्स्ट पैटर्न इज देखिए ट्रायंगल में, आप इन डॉट्स को ध्यान रखें. ओके, नेक्स्ट व्हाट शुड कम नेक्स्ट. फिर ये राइट साइड आएगा, देन डाउन. देखिए F, इसको आप रोटेट करते जाएंगे 45 डिग्री ईच टाइम. द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम. विच विल बी द नेक्स्ट? Tick the right one and right is this. Using the same rule, take it forward till you get back to what you started with. देखिए इसको आप रोटेट करते जाएंगे. ओके, using the same rule, take it forward till you get back to what you started with. इसको आप इस तरीके से फॉलो करें. Some patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rule. Then choose what comes next from the right side of the line and tick it. देखिए इसको हम 45 डिग्री पे टर्न करते जाएंगे. And the next is this. अब some patterns given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rules, then choose what comes next from the right side of the line and tick it.
and that is the answer. Then next, also 90-degree turn, and this is the correct answer. This also 90-degree turn, and that is the answer. Look for a pattern, mark that picture which is breaking the rule, also corrected. ये देखिए आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं और इनमें आपको जो पिक्चर रूल तोड़ रही है उसको मार्क करना है. That is the answers for all patterns. Okay. The answers should be. ये देखिए इस पैटर्न को आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं. Okay, and next is fill this square using all the numbers from 46 to 54. Rule: the total of each line is 150. आपको एवरी लाइन का 150 टोटल बनाना है. ये देखिए 53 प्लस 48, 49, इस तरीके से फिल करें. Fill this square using all the numbers from 21 to 29. Rule: the total of each side is 75. यहाँ 25 दिया गया है, आपको 21 से 29 तक इसमें फिल करना है और each side is 75 होनी चाहिए. ये this is the answers. Look at the pattern of numbers in hexagon. ये hexagon में जो नंबर्स दिए गए हैं, ईच साइड हैज 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स. देखिए हर साइड में 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स है. इन एवरी साइड 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स. 5 into 13, 65. Like this, 5 into 13, 65. 13 into 2, 26. 10 into 2, 20. 10 into 7, 70. And 14 into 7, 84. 14 into 5, 70. Look at the number 65 in the box. Which are the circles next to it? Can you see how the rule works? देखिए circles having numbers 5 and 13 are next to the number 65. In this rule, both the numbers in the circles are multiplied to get the number in the box. Got it? Use the same rule to fill the hexagon below. जो हमने पीछे जो जिस रूल को फॉलो किया है उसी को फॉलो करके आप इन हेक्सागन्स को फिल करें. एंड द आंसर इज दिस. नंबर्स एंड नंबर्स. ये देखिए 24 प्लस 19 प्लस 37 इज इक्वल टू 37 प्लस 24 प्लस 19. Are they equal? Answers: yes, both of them are equal because we are adding same numbers on both the sides. Only their order will change. 24 plus 19 plus 37 is equal to 80. 37 plus 24 plus 19 is equal to 80. And second is 215 plus 120 plus 600 is equal to 935. And 600 plus 215 plus 120 is 935. Order does not matter in addition. Fill in the blank spaces in the same way. ये देखिए ब्लैंक स्पेस आपको दिया गया है, इनको आप सेम वे में फिल करें. 34 प्लस 14 प्लस 20. 14 plus 34 plus 20 and 34 14 plus 20. Okay. Second question. आप इसको भी सेम तरीके से फिल कर सकते हैं. 42 को यहाँ रख के इन दोनों को वो हो और ये हो गया करेक्ट आंसर. अब दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल.
ये देखिए 10 plus 40 plus 50 is equal to 50 plus 10 plus 40. Now look at this. 48 into 13 is equal to 13 into 48. Check if it is true or not. 48 into 13, 624. Obviously, it is correct. Their multiplication is equal. So it's true. Left, right, same to same. Can you see something special about 121? But it's just a number. See, it is the same forward as well as backward. Oh yes, it is 1 to 1 from right to left also. क्योंकि इसको 1 to 1 आप right से left से एक तरह से लिख सकते हैं. Come, let's see how to get such numbers. Take a number, say 43. Now turn it back to front, 34. Then add them together. इन दोनों को add करेंगे तो 77. 77 is one such special number. There are many such numbers. You have reversed the number by writing it back to front. Take another number, 48. Now turn it back to front, 84. Then add them together, 132. Is this a special number? No. Why not? Okay, carry on with the number. Again turn it back in front, 231, 231. Then add the 2 together, 363. Oh, 363 is a special number because we can turn it anyway. Try and change these numbers into special numbers. A 28, B 132 and C 273. Answer is, take number 28, turn it in the reverse order to get 82. Add them together. 28 plus 82 is equal to 110. But this is not a special number because when we reverse its order, we get 011. Now we add 110 plus 011 is equal to 121. When we reverse its order, we get 121. Thus, it is a special number. B. Take the number 132. Turn it in the reverse order to get 231. Add them together. 132 plus 231. 363. When we reverse its order, we get 363. Thus, we get the special number as required. C. Take the number 273, turn it in the reverse order to get 372. Add them together. 273 plus 372 is equal to 645. इन दोनों को ऐड करेंगे तो, but this is not a special number because when we reverse it order we get 546. हमें इन दोनों को जमा करके 645 प्राप्त हुआ, लेकिन ये स्पेशल नहीं है क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 546 आएगा. नाउ इफ वी सब्सट्रैक्ट देम वी गेट 645 माइनस 546 इज इक्वल टू 99. व्हेन वी रिवर्स इट्स ऑर्डर वी गेट 99 विच इज अ स्पेशल नंबर, क्योंकि 99 यानी कि 99 को हम अगर रिवर्स भी करेंगे तब भी 99 आएगा, इसलिए ये स्पेशल है. No lemons, no melon, step not on pets. Did you notice that it reads the same from both sides, right to left and left to right? Now try and use words in a special way. Answer. Madam, M-A-D-A-M. I race car. A Santa at NASA. ये देखिए, अगर आप इसका स्पेस खत्म कर देंगे बीच में से तो ये उस तरफ से भी रिवर्स से भी सेम ही पढ़ा जाएगा. ओके, लुक एट द कैलेंडर बिलो. लेट अस मार्क अ 3x3 बॉक्स. 9 डेट्स ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक. ये देखिए, हमने 3 डेट्स को 9 डेट जो है ये 3 करके इसको बॉक्स में बना दिया है. अब इनका मैजिक देखें. टेक द स्मॉलेस्ट नंबर 3, एड 8 टू इट. इसमें ऐड करेंगे
11, मल्टीप्लाई इट बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 99. Now you choose any 3 into 3 box from a calendar and find the total in the same way. ये देखिए, ये हमने 3 लिया और एक और 3 को चूज कर लिया. टेक द स्मॉलेस्ट नंबर 4. इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4. एडिंग 8, अब इसमें 8 ऐड किया 12, मल्टीप्लाइंग बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई किया 108. सो द सम ऑफ द all the numbers in the selected box is 108. Take any number, now multiply it by 2, 3, 4 at every step. Also add 3 to it at each step. Look at the difference in the answer. Is it the same at every step? A 12 into 2 plus 3, 27. 12 into 2, 24. 24 plus 3, 27. 12 into 3 plus 3, 39. तो इस तरीके से हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे. ये देखिए, अब difference between 39 minus 27 is equal to 12. Difference between 59 minus 39, 12. Difference between 63 minus 51, 12. तो इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो है 12. Thus the difference is same at all the steps. Look at the numbers below. Look for the pattern. Can you take it forward? In brackets 9 minus 1 divided by 8. 9 minus 1 8. 8 को 8 से डिवाइड किया 1. 98 minus 2 96. 96 डिवाइडेड बाय 8 12. ये देखिए, ये यहाँ पे सब आंसर्स दिए गए हैं. स्मार्ट एडिंग. ओह, आई कैन फाइंड इट क्विकली. What if someone gives you to add 10 numbers together? देखिए, अगर आपको 10 नंबर्स एक साथ दिए गए हैं ऐड करने के लिए तो आप कैसे करेंगे? How can you do that? I can get the sum without adding. देखिए, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है. इसका टोटल है 55. इस तरीके से आपको 10 नंबर्स के सम दिए गए हैं. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 is equal to 155. क्योंकि एवरी जो इसमें सब के आपको टोटल दिए गए हैं. इन ईच सक्सीडिंग पैटर्न द फाइनल सम इज इंक्रीज्ड बाय 100. क्योंकि हर पैटर्न के साथ 100 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इन सब के में 100 प्लस करेंगे. Fun with odd numbers. Take the first 2 odd numbers. Now add them. See what you get. Now at every step add the next odd number. 1 plus 3 is equal to 4 is equal to 2 into 2. 1 plus 3 plus 5 is equal to 9 equal to 3 into 3. 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16 is equal to 4 into 4. इस तरीके से इन सब के यहाँ सॉल्यूशन दिया है. As there are uncountable or infinite numbers, these pattern will never come to an end. Secret numbers. Banno and Binod were playing a guessing game by writing clues about a secret number. Each tried to guess the other's secret number from the clues. Can you guess their secret numbers? It is larger than half of 100. It is more than 6 tenths and less than 7 tenths. The tenth digit is one more than the ones digit. Together the digits have a sum of 11. What is my secret number? The answer is, it is larger than half of 100. Half of 100 is 50. And answer is 50. And second, it is more than 6 tenths and less than 7 tenths. It can be 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 70. From these numbers, any number is answer.
The tens digit is one more than ones digit. Ones one digit 7 and tens digit 67. So the answer is 65 because 6 is tens digit and one more than ones digit. 6 tens digit, 5 one digit. टुगेदर द डिजिट मेक द सम ऑफ 11 और अगर दोनों डिजिट को एक साथ कर दें तो उनका सम 11 बन जाता है 6 + 5 इज 11 सो द करेक्ट आंसर इज 65 व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर अब आपके पास एक और पजल है उसी तरह से इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 इट इज more than 4 tens and less than 5 tens. The tens digit is 2 more than the ones digit. Together the digits have a sum of 6. Less than half of hundreds. It means it will be 50. And it is more than 4 tens and less than 5 tens. More than 4 and less than 5, it means it will be 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. The tens digit is 2 more than 1 digit. So the answer will be 42 because 4 is tens digit and 2 more than 1 digit. 4 tens digit, 2 ones digit. Together the digit make the sum of 06. So we add 4 and 2, 6. Correct answer is 42 because the sum of 4 and 2 is 6. Number surprises. Ask your friend, write down your age, add 5 to it, multiply the sum by 2, subtract the 10 from it, next divide it by 2. What do you get? Is your friend surprised? Answer, let the age of my friend be 9 years. Adding 5 to it, we get 9 plus 5, 14. Multiplying this sum by 2, we get 14 into 2, 28. Subtracting 10, we get 28 minus 10, 18. Dividing it by 2, so 9. After doing all the operations, we again get the age of our friend's age as the final age is 9. Okay, बच्चों? Take a number, double it, multiply by it 5. Divide your answer 10. Take a number 10, इसे डबल किया 20, मल्टीप्लाई किया 100, डिवाइड बाय 10. इसी तरीके से एक और सम आप देखिए, ये आंसर दिया गया है. Look at this pattern of numbers and take it forward. 1 into 1, 1. 121 is equal to 11 into 11. And 111 is into 111 is equal to this. तो 1 आपके पास ये देखिए आंसर दिया गया है. 4 times once, then 5 times, then 6 times, and the number increasing continuously. So आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताएं. थैंक यू.